Good morning, students. I hope you all are doing well at your places. And today we'll be studying a very important part of grammar, that is tenses. Tenses क्यों use करते हैं? Tenses basically tells us the time, right? The present time, the past time, and the future time. So those tense that tells us the present time, it is known as present tense. The tense जो हमें पुराने टाइम के बारे में बताएगा, पास्ट के बारे में, हमारा बीता हुआ कल, that is the past tense. Whereas that tell us about the future, आने वाला कल, उसको हम बोलेंगे future tense. So let's just begin with this, and you will definitely like this chapter. So let's just begin. So the title of our chapter is the tense, right? So what do you mean by tense? Discuss with your teacher. I have already explained you in the introduction that what is tense. So tense basically tells us about the time when an action is performed, कि action कब perform होता है. The present time tells us the action which occurs in the present time, जो हमारा present time में action हो रहा है. जैसे कि for example, my mother cooks tasty food. मेरी मम्मी बहुत ही tasty खाना बनाती हैं. अमित प्लेस क्रिकेट. अमित क्रिकेट खेलता है. द सन राइजेस इन द ईस्ट. सन क्या है? ईस्ट में राइज करता है. राधा राइट्स पोएम. राधा पोएम्स लिखती हैं. आई जंप विद जॉय. मैं बहुत खुशी से जंप करता हूँ. द चीता रन्स फास्ट. और चीता बहुत ज्यादा फास्टली रन करता है. द पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब इज यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट द एक्शंस व्हिच हैड टेकन प्लेस अर्लियर, जो पुराने समय पे हो चुकी है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आर टीचर टुक अस टू द जू. हमारी टीचर हमको जू लेकर गई थी. एंड वी ऑल नो जू इज अ प्लेस जहाँ पे एनिमल्स आर केप्ट, राइट? वी प्लेड द क्रिकेट यस्टरडे. हमने कल क्रिकेट खेला था. आई एट ब्रेकफास्ट एट 8 AM. मैंने 8 AM पे अपना ब्रेकफास्ट कर लिया था. रोहन रैन फास्ट इन द रेस. रेस में रोहन ने बहुत तेज भागा था. गरिमा सॉ द टाइगर इन द जू. गरिमा ने टाइगर को देखा था जू में. एंड अंकित वेंट टू द पिकनिक. अंकित पिकनिक गया था. Whereas about the future tense, it tells us about the action which will occur in future, जो कि हमारे future में होंगे. जैसे कि for example, Anil will go to school tomorrow. अनिल कल स्कूल जाएगा. He will become a doctor when he will grow up. जब वो बड़ा हो जाएगा तो वो क्या बनेगा? डॉक्टर बनेगा. I will play in the park in the evening. मैं इवनिंग में पार्क में खेलूंगी. रिचा will sing a song tomorrow. रिचा कल गाना गाएगी. मदर will bake a cake in the evening. मदर जो है इवनिंग में केक बनाएंगी, राइट? सो देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब. प्ले का क्या होता है? प्ले पास्ट. पहले हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर पढ़ेंगे, राइट? प्ले का प्लेड, प्लेड एंड विल प्ले, राइट? डू का डिड, डिड एंड विल डू, कि हम आगे करेंगे. हैज हैव का हैड और विल हैव, राइट? गो का वेंट एंड विल गो. यू ऑल हैव टू लर्न दिस बाय हार्ट, दीज फॉर्म्स ऑफ वर्ब. स्पीक का स्पोक एंड विल स्पीक, राइट? टीच का टॉट, विल टीच, राइट? Run का ran and will run. Sing का sang and will sing. Talk का talked will talk, right? Sleep का slept and will sleep, right? Sell का sold and will sell, right? Now it's present, past and future, more forms of verb. Run का ran will run, right? Feel का felt will feel, okay? Make का made will make, right? Throw, threw will throw. Next is write, wrote and will wrote, will write. And draw, drew will draw, okay? Cry ka cried will cry, okay? Eat, ate will eat. And jump ka jumped will jump. And come ka came will come. And tell ka told will tell. So there is a quick recap that present tells us an action which is done now, जो कि अभी हुआ है. Like presently I am teaching you. Past tense, it shows the past time, whereas future shows the coming, or you can say the future time. Moving on to the exercise, first we'll be doing the correct form of verb, right? Fill in the blanks with the correct form of verbs given the lion dash in the forest. The lion जो है वो अभी roar करते हैं, तो lion roars in the forest, right? Right? Shivi dash a song. Shivi sings a song, right? I dash play in the evening. I will play. मैं खेलूंगी इवनिंग में. He dash go to school every day. He goes to school every day. Ankur dash a poem. Ankur write a poem. Writes a poem. Right? You have to change the verb into the past tense. Ask का क्या हो गया? Asked. Want का wanted. Right? Answer का answered. Close का closed. Open का opened. Cook का cooked. Jumped.
and sell ka sold. Right? So I hope you all understood this chapter. Please go through this chapter and revise, and of course revise the previous concept, and stay blessed. Thank you.